Hello everyone. So today's video is all about bathroom etiquette, which is a subtopic under etiquettes. So what is bathroom etiquette and why we need to learn about these etiquettes? They are very much important if we talk about the overall etiquettes, as most of the people in India, they do not have any idea about these etiquettes, and they play an important role in depicting your overall personality and your overall mannerism. So, if somebody wants to judge you or if somebody wants to know about you, they might check your washroom, or if you visit that person place, they might check their washroom after you use. This shows that what kind of person you are. This shows that how hygienic you are. This shows that how careful you are. So we need to learn certain amount of etiquettes if we are using bathroom. So here we'll be learning about some of the important etiquettes which are around point 10s, which will talk about the bathroom etiquette which everybody should know, and at least they should practice in each and every one and at every place. So let's begin. Have you ever had a cleanup after a guest who used and left with a mess in your bathroom? कैसा लगा होगा आपको? So, we'll be here talking about bathroom etiquette. Bathroom etiquette is one of the least discussed topic, or you can say least discussed etiquette topic, but it is the one topic which needs to be addressed. So, here I am presenting top 10 tips of bathroom etiquette. Let's begin. So, the first tip, or you can say the first etiquette, talks about that always check first. What does it mean? So it means if you want to use somebody's bathroom or anywhere you want to use the loo bathroom, then you should always check first whether the bathroom is vacant or it is occupied. Somewhere or sometimes it is mentioned over there on the door, occupied or vacant. But it is not necessary that हर जगह ये चीज़ mention होगी. So what you have to do, you have to check the lock, right? जो entrance lock होगा उसको आप check कर सकते हैं whether it is locked or it is just opened. और अगर आपको तब भी थोड़ा सा लगता है कि somebody might be inside, then you can just simply knock the door and you can just ask, is there somebody inside or not? Before even entering, you should always knock the door. If you are fishy about something like कोई भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. If you are sure that nobody is there, it is totally vacant, then you can obviously use the washroom. But if you think and if you have a doubt that there must be somebody inside or there might be somebody inside, then you can just check by three ways. You can check whether it is occupied or vacant, you can knock the door, or you can check even the whether it is locked or not. But always check before using. Point number 2, or tip number 2, talks about do not talk in restroom. Alright, so this is like a very common thing which is like people are adopting day by day. What they do, they if let's suppose if they got a call from somebody and they need to use the loo or bathroom. So what they'll do, they'll just carry their phone into the restroom and they'll start talking over there. See, bathroom is for the purpose of you to freshen up. It is not a conference room or it is not a talking or chatting room where you are just chatting with somebody. Yeah, might be possible कि कभी कभी आपको बहुत ही important call receive करनी है, and it is like it is a do or die situation or it is something very important related to your personal or professional, then you can just pick that call up. But that doesn't mean you will be just going on chatting. No, if it is necessary, you can just pick that call up, you can just listen to the person whatever he or she is saying, and then you can just ask that person, can I call you after 5, 10, 15 minutes? But you should always avoid these things like chatting, talking on the phone in the restroom, because restroom is for the purpose of you to freshen up or do the whatever you want to do. But it is not a conference room and it is not a chatting room where you just go and chat with your friends or family member or anybody like that. So because what happens if you are doing this habit किसी और के घर पे जाके,
Trust me, they will judge you based on your manners, that you do not have manners, and they might get bothered, और हो सकता है वो डिस्टर्ब भी हो जाए आपकी इस नेचर से. सो ऑलवेज अवॉइड talking and chatting in the restroom while doing your things. You can just always do these things later on also, right? So always avoid. Point number 3 or tip number 3. So it is like an extension to point number 2, or you can say the thing related to point number 2. So it talks about that you should not carry your cell phone into the washroom or restroom or bathroom. In everywhere around the world, it has become a very what do you call, very weird habit of carrying their phone into the washroom. People are taking their phones like it is a very necessary thing. If they won't take that phone or cell phone into the washroom, nothing gonna happen, और जिस पर्पस के लिए they are going वो पर्पस ही फुलफिल नहीं होगा. Trust me, it is a very bad habit. Not only because you're just carrying your phone. No, it is bad from the point of view of hygiene also, because when you are carrying your phone into the restroom, obviously restroom is not a place which is like clean like your kitchen or like your bedroom or like that. So restroom is for the purpose. तो उस पर्पस के लिए व्हेन यू आर गोइंग एंड यू आर यूजिंग योर फोन, तो आपकी डर्टी हैंड्स भी आपके फोन पे लगना ही लगना है. एंड वही चीज, यू कैन नॉट वॉश योर फोन. तो आप ऐसा तो करते नहीं हो कि वाइल वॉशिंग योर हैंड्स यू जस्ट वॉश योर हैंड्स. नो, सॉरी, वाइल वॉशिंग योर हैंड्स यू जस्ट वॉश योर फोन. नो. सो इनडायरेक्टली क्या हो रहा है कि उस पे जो भी जर्म्स है वो उसी के ऊपर रह जाते हैं, जो बाद में हेल्थ इश्यूज भी क्रिएट करते हैं. सेम टाइम पे इट इज नॉट अ गुड मैनर्स ऑल्सो, क्योंकि वॉशरूम के लिए सेलफोन नहीं बना है. सेलफोन इज फॉर एवरीथिंग बट आउटसाइड वॉशरूम. इट इज नॉट फॉर द वॉशरूम पर्पस. तो अपने घर में है या किसी और के घर में है या कहीं पे भी है, आप बस ये चीज़ अवॉइड कीजिए कि आप सेल फोन वॉशरूम में लेके ना जाएं, क्योंकि अगर आप किसी और के घर पे हैं और आप ये चीज़ें कर रहे हैं तो दे माइट जज यू बेस्ड ऑन योर हाइजीन और समथिंग लाइक दैट, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग एंड विच इज़ नॉट अ गुड एटिकेट ऑल्सो. सो ट्राई टू अवॉइड दीज थिंग्स. Point number 4 or tip number 4 of bathroom etiquette talks about that you should always flush the toilet and cover the evidence. Now, this is a very normal thing and सबको पता होता है कि we need to flush after every use. ठीक है, और अगर नहीं होता है तो जनरली वहाँ लिखा भी होता है, मेंशन होता है कि काइंडली फ्लश. बट फिर भी I don't know why we Indians have this habit of forgetting things. हम उन चीज़ों को भूल जाते हैं. कभी कभी हम बिना फ्लश करे बाहर आ जाते हैं, कभी कभी हम एविडेंसेस को कवर भी नहीं करते, विच इज़ नॉट एट ऑल अ गुड थिंग. एंड ट्रस्ट मी, ये अनहाइजीनिक तो है ही है, बहुत ही इल मैनर्ड आपकी चीज़ों को दिखाता है दैट यू आर नॉट अ मैनरफुल पर्सन. यू डू नॉट हैव एनी रिस्पेक्ट टुवर्ड्स एनी थिंग, राइट? सो हमेशा क्या करेंगे, आपने माइंड में ये चीज़ रखना है that I have to flush after every use, and if there are any evidences just cover it up. Because क्या होता है कि जो पर्सन आपके बाद यूज करने वाला है उस वॉशरूम को, वो आपके लिए एक बहुत ही गलत इमेज ले लेगा अगर आप ये सारी चीज़ों को ध्यान में नहीं रखेंगे. ऑब्वियसली वो आप चाहते भी नहीं होंगे कि वो ऐसा कुछ सोचे. आप किसी के घर पे गए हैं एंड अगर आपने वो बाथरूम यूज़ किया और फ्लश नहीं किया, एविडेंसेस को कवर नहीं किया, तो ट्रस्ट मी, they are going to judge you like hell, and they are going to tell people that you do not have manners to use washroom, which is not a good thing obviously, right? And it is not a good part of etiquette also. So हमेशा ये ट्राई करिए कि जब भी आप कहीं पर भी वॉशरूम यूज़ करें, being at your home, होटल, आउटसाइड, फ्रेंड्स होम, रिलेटिव्स होम, हमेशा फ्लश करें और एविडेंसेस को कवर करें. Do not forget to do these things because this shows that how mannerful you are and how mannerless you are. Tip number 5, or you can say etiquette number 5, talks about that you should always dispose of your personal hygiene products. यहाँ पे जब हम पर्सनल हाइजीन प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. आई एम सेइंग दिस लाइक अगेन एंड अगेन दैट इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी रिमेंबर एंड टू बी कीप इन माइंड दैट यू शुड ऑलवेज डिस्पोज ऑफ योर पर्सनल हाइजीन प्रोडक्ट्स, बीइंग इट गर्ल और अ बॉय, does not matter, and irrespective of any gender, if you are using anybody's bathroom or for the sake of thing,
if you're using your own bathroom, always dispose of your personal belongings which are supposed to be disposed of, right? Because if somebody else will find those things or your personal hygienic things or products, they will not like it. And trust me, they might feel offended about it. If you are at somebody's place, they will definitely, I am 100% sure, they'll feel very offended and they'll feel disgusting for you. Like you are not a good person and you do not have manners, you are unhygienic, and so on. If you are at your own place or if you're using your own washroom, trust me, if people will not judge you, that means that they are your family, but you will get scolded, and that too very badly. So, in order to avoid all these things and in order to practice good etiquette, always keep in mind that I have to dispose of my personal hygiene products at any cost. Do not forget this. How can you forget, yaar? No, you cannot forget all these things because they are highly important, as like eating food or sleeping. They are also very much important. So, as a purpose of etiquette or being a mannerful person, you should always keep in mind that I need to dispose of certain things which need to be disposed of. Always keep in mind. Point number 6, or you can say tip number 6 under bathroom etiquette, talks about washing your hand after every use. You must be thinking that, oh, ma'am, what are you saying? Everybody wash their hands after use. But no. In India, people have this perception if they have used Western toilet, then their hands are not dirty. Or they will just come up with this excuse, I did nothing. I just came, like I just went inside. I did it and I just came. I didn't touch anything. I didn't touch anything dirty or something like that. But come on, you have used bathroom, restroom, which is already a place which is not as hygienic as your bedroom or any place of your house. So you should wash your hand. That's why I have mentioned this point at point number 6, because in India awareness is required. People generally do not wash their hand after they use the loo. In some cases they do, in some cases they do not, or sometimes they just come up with this excuse that I did nothing, I didn't touch anything, or something like that. So, this is not a good thing, and this is not a good practice of etiquette. It shows that you are not at all a hygienic person. You have no idea that how many germs you are taking from restroom to other parts of the house. So, हमेशा अपने hands को wash करें, चाहे आप कुछ भी करने रेस्टरूम में गए हो. It does not matter, but if you have been to restroom, if you have been to bathroom, you should wash your hand and then come out, because then only you are practicing a good etiquette, then only you are practicing a good hygienic environment as well as a life. So it is highly recommended and it is highly required that you should keep in mind of washing your hands after every use. Tip number 7, or you can say point number 7 under bathroom etiquette, talks about that you should clean up after every use and by yourself. It does not mean कि आपको एक पूरा process follow करना है, झाड़ू लगाना है or something like that. No. When you are using anybody's restroom, चाहे वो अपना ही यूज़ कर रहे हो या होटल में हो या किसी के घर पे हो, if you are using somebody's restroom, then flush करने के साथ साथ sometimes it is required that अगर आपने कुछ लिटर फैलाया है वहाँ आसपास, तो वो आप खुद ही क्लीन करें, because people will come and they will use after you just done. ठीक है, तो when they'll use, if they'll see all these things or all these litter जो आपने फैलाया है, they will not feel good about you. Obviously they'll come out and they'll say, maybe if they are your family member, they'll scold you. If they are relative, they're gonna talk behind you. If they are friends, they'll be like talking to each others कि okay यार ये इसने तो छोड़ के चला गया ये या चली गई ये. So please avoid करें इन सब चीज़ों को. आपका जो भी पर्सनल बिलोंगिंगनेस है, अगर आप वहाँ भूल भी गए हैं तो आप सॉरी बोल सकते हैं and you can just clean after yourself. But ट्राई यही करें कि जब भी आप किसी का रेस्टरूम यूज़ करें तो कुछ भी ऐसे अनवांटेड चीज़ें वहाँ ना छोड़े या अनवांटेड लिटर ऐसा ना फैलाए जिससे जब सेकेंड पर्सन यूज़ करने जाए तो उसको कोई भी इनकन्वीनियंस हो. सो दैट्स वाई इट इज़ रिकमेंडेड that you should always clean up after yourself and check once before leaving the restroom ना. check once कि सब कुछ जैसे मैं एंटर किया था वैसे था तो वैसा ही छोड़ के जाऊँ,
कुछ भी इधर उधर लिटर फैला के ना जाऊं, तोड़ के ना जाऊं, या फिर कुछ भी गंदा करके ना जाऊं. So always keep this in mind. Point number 8, or you can say tip number 8 under bathroom etiquette talks about that you do not hog the mirror. What does it mean? It means if someone is waiting to wash her hands or use the mirror after you, then do not make them wait longer. Okay, this happens mostly in malls, or you can say in restaurants and something like public places like that. बिकॉज क्या होता है कि आप रेस्ट रूम में जाते हो और आप मिरर के सामने खड़े होके यू जस्ट स्टार्ट स्टेयरिंग योर सेल्फ, यू जस्ट स्टार्ट like taking care of your things and something like that. It's good, it's no harm. लेकिन हमेशा ये भी चेक करना है कि क्या आपके पीछे कोई वेट तो नहीं कर रहा है रेस्ट रूम को यूज़ करने के लिए, लू को यूज़ करने के लिए. उसके बाद ही आप अपना वहाँ पे टाइम ले सकते हैं. इफ़ nobody is waiting outside, you can take time, you can take 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. But if somebody is waiting to use that restroom, तो आई डोंट थिंक सो कि आपका अपने आप को शीशे में घूरना इतना इम्पॉर्टेंट है जितना नेक्स्ट पर्सन के लिए वो रेस्ट रूम यूज़ करना इम्पॉर्टेंट होगा. तो इन चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है, बिकॉज बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ से अनॉय हो जाते हैं और उनको गुस्सा आने लगता है. कभी कभी तो लोग गुस्से में बोल भी देते हैं कि विल यू प्लीज़ कम आउट, आर यू डन, निकलोगे नहीं निकलोगे. और समटाइम्स अगर वो कुछ नहीं बोलते हैं तो व्हेन यू विल कम आउट ना, दे विल गिव यू वेरी वियर्ड लुक. घर में भी ये चीज़ होती है, ऐसा नहीं है. इफ़ यू हैव अ वन वॉशरूम एंड इफ़ यू आर जस्ट लाइक वेटिंग, लाइक डूइंग योर थिंग्स इन वॉशरूम, यू आर जस्ट स्टेयरिंग योर सेल्फ इन द वॉशरूम इन द मिरर, हो सकता है कि आपके कोई फैमिली मेम्बर वेट कर रहे हो आपका कि आप बाहर जल्दी से आए हो ताकि वो रेस्ट रूम यूज़ करें. हो सकता है उनको कहीं जाना हो एंड दे आर गेटिंग लेट. सो it's not harm, it's no harm that you are using washroom and you are looking yourself in the mirror, but always make sure कि कोई वेट ना कर रहा हो, और अगर कर रहा हो तो ज़्यादा देर उसको वेट नहीं कराना है. Let them also use the washroom. So always keep in mind that do not hog the mirror all the time. Point number 9 or tip number 9 under bathroom etiquette talks about a very relevant and very important point जो generally लोग face तो करते हैं but they always try to ignore it, or they always try to avoid it, which is if there is a clog, report it to the cleanliness department or the concerned person. इसका मतलब है कि कभी कभी इट इज़ वेरी मच नॉर्मल कि आपका जो भी रेस्ट रूम है वो क्लॉग्ड हो जाता है, ठीक है, विद द डस्ट, विद मैनी थिंग्स. ऑलराइट, तो अगर आप घर पे हैं देन यू शुड इन्फॉर्म द कंसर्न पर्सन. दैट कंसर्न पर्सन कैन बी योर मेड, can be like, you can, if you are not talking to anybody, you can just talk to your mom and you can just inform your mom that this is happening in the restroom. And if you are at a somebody else place, then you should just inform that person जिसकी वजह से आप वहाँ हैं. Let's suppose you are at a friend house, then you can inform your friend. If you are at a relative house, you can inform your relative. If you are in a mall, then also you should report it to the cleanliness department of the mall. Or if you are in a restaurant, then also you should report it to the department concerned. But do not ignore it and do not just avoid it, because ये बहुत important चीज़ है. हो सकता है आपको वो प्रॉब्लम फेस हुई, अगर आप क्लीननेस डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर दोगे वो चीज़ क्लियर कर दी जाएगी ताकि सारे लोग अच्छे से यूज़ कर सकेंगे. बट अगर आप उस चीज़ को इग्नोर करके और अवॉइड करके चले जाओगे तो आपके पीछे जो भी यूज़ कर रहे हैं वो भी चले जाएंगे, तो ये प्रिलॉन्ग्ड प्रॉब्लम चलती रहेगी. एंड इट इज़ नॉट अ गुड एटिकेट ऑल्सो, क्योंकि इट इज़ लाइक अ रनिंग अवे फ्रॉम अ प्रॉब्लम. सो यू नीड नॉट टू रन अवे फ्रॉम अ प्रॉब्लम. अगर आपको दिख रहा है देयर इज़ अ प्रॉब्लम, यू कैन ऑलवेज inform the concerned person. They'll always take the needful, whatever is the needful, they'll always take a good step जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए. बट डू नॉट अवॉइड इट. Point number 10 or tip number 10 under bathroom etiquette talks about a very important line जो आपने बहुत बार पढ़ी होगी और आपने पढ़ के इग्नोर भी कर दी होगी, या फिर आपने कभी कभी उसके बारे में सोचा भी होगा, which says that leave as you want to see or use. सिंपल है, हमेशा वॉशरूम यूज़ करने के बाद वैसे ही वॉशरूम को छोड़ें जैसा आप चाहते थे कि आपको वॉशरूम मिले. This is a very simple line, but it has a very deep meaning in it regarding this etiquette of bathroom. That means when you enter into a bathroom, अगर आप चाहते हो कि आपको आपके बाथरूम में ऐसी चीज़ें मिलें या
आप जब भी कोई रेस्ट रूम यूज़ करो कहीं पे भी, तो आप चाहते हो कि वो रेस्ट रूम आपको ऐसा मिले, दैट मीन्स साफ मिले, हर चीज़ प्रॉपर प्लेस पे हो, क्लॉग्ड ना हो, अनवांटेड स्टफ वहाँ पे ना हो। तो प्लीज़ मेक श्योर कि जब आप वो रेस्ट रूम यूज़ करके निकलें तो आप भी उसको वैसे ही छोड़ के आए जैसा कि आपको मिला था। अच्छा, इस चीज़ के ना समटाइम पीपल टेक इट नेगेटिव वे कि मैम आई गॉट दैट वॉशरूम और रेस्ट रूम इन अ वेरी बैड हालत, तो आई लेफ्ट इट इन अ वेरी बैड हालत। दिस इज़ अ रॉन्ग थिंग। आपको अच्छी चीज़ में तो अच्छा करना ही है, लेकिन अगर आपको वहाँ चीज़ें खराब भी मिली हैं एंड इफ़ यू कैन डू समथिंग अबाउट इट, डू इट एंड देन कम आउट as a very clean person, because this will show that how mannerful person you are. This will show that you have etiquettes other than people, right? So इस लाइन को बहुत पॉजिटिवली लेना है कि जब भी आप वॉशरूम से निकले तो वैसे निकलें जैसा आप चाहते थे कि आपको वो रेस्ट रूम मिले। हो सकता है कि कभी कभी आपको रेस्ट रूम वैसा ही मिलेगा, या हो सकता है नहीं मिलेगा। तो नहीं मिलने वाले केस में भी मेक श्योर कि आप उसको क्लीन करके आए। क्लीन डज नॉट मीन जो क्लीननेस डिपार्टमेंट करता है वो क्लीनिंग नहीं, बट जितना यू कैन डू। बट always keep this in mind that restroom is something which has to be cleaned, which has to be properly hygienic, so maintain that.